So today we are going to learn about public and private healthcare service. Okay. In previous lesson you know about Ranjan and Aman story. Okay. So from this story you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities into two categories. First, it is public health service, and second, it is private health facilities. Okay. So let's start with the public health service. The public health service is a chain. Okay, it is the chain of health centers and hospitals run by the government. It is run by the government. Government द्वारा संचालित की जाने वाली हॉस्पिटल सेवा, ठीक है, आरोग्य सेवा, that is called public health service. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special service. And this government facility that is linked with the rural and urban areas, गांव खेड़े में और सिटीज में भी ये सेवा उपलब्ध है. Okay, and it gives us special and common and special service also. Okay, from the common illness to the special service. Okay, so at the village level there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. एक विलेज हेल्थ वर्कर और एक नर्स या गांव में जो पीएचसी होता है. ओके, सो एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स बट देयर ओनली नर्स एंड हेल्थ वर्कर्स. ओके, दे वर्क फॉर एंड दे आर trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors. So these nurse and health workers, they are trained, but it is for only common illness. जो सर्दी जुकाम छोटे मोटे जो illness होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये नर्स और हेल्थ वर्कर्स होते हैं. Okay, so they work under the supervision of skillful doctor. Okay, so they are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors. At the primary health center, that is called PHC. PHC means what? Primary health center. Such a center covers many villages in a rural area. तो ये जो PHC है ये गांव खेड़े में बहुत सारे एरियाज को कवर करता है. At the district level, okay, there are also health centers. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स होते हैं. लार्ज सिटीज हाउ मेनली ओके देयर आर सो मेनी क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स. ओके, बट इन देयर लार्ज सिटीज आल्सो देयर हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ओके, एंड यू नो देयर सच इज वन वेयर अमर वाज टेकन. ओके, एंड देयर आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वंस वेयर हकीम शेख टेकन. So Hakim Sheikh and Aman, okay, both were treated in the government hospitals. So these health services, okay, it's called public. So why it's called public? It's called for many reasons. First, in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health center. Government has a commitment to provide you safe, okay, and all types safe drinking water, education also, okay, and government have to providing health care to all citizens. Okay, so government commitment to us. गवर्नमेंट का काम है कि हमारी हेल्थ केयर सर्विस हेल्थ को ठीक से संभालना. ठीक है, हमें जो जरूरत जो दवाइयाँ हैं वो सब देखिए. अभी मतलब कोरोना जो हो गई तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोरोना का इलाज फ्री हो रहा है.
ठीक है ना. सो ये इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, टू प्रोवाइड अस हेल्थ केयर, ओके, टू ऑल सिटीजन्स. Okay, the government has established these hospitals and health center for the public. Also, the resources needed to run this service are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. Okay, so we pay taxes to the government. Okay, and government use that taxes, okay, for the various welfare activities. Like that, public health care, okay, hospitals, then education, irrigation, so many, okay. So government run welfare activities. He use that taxes, okay, which we pay to the government, so that government have a commitment to serve public. ठीक है, public की सेवा करना, okay, because it is the primary responsibility of the government. Hence, such facilities are meant for everyone. It is not for a single person. It is for everyone. सभी को ये facilities का लाभ मिलेगा. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care services, either free or at a low cost. या तो फ्री में दो या फिर लो कॉस्ट पे दो, बहुत ही कम कीमत में. ओके, सो दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट दे हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस. क्वालिटी हेल्थ सर्विस हैव टू प्रोवाइड टू द पब्लिक, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट. अगर बहुत ही लो प्राइस हो, लो कॉस्ट हो या फिर फ्री हो, तो क्या होगा, एक गरीब व्यक्ति भी, the poor also. So you know that one of the most important aspects of the public health system is that it meant to provide quality health care service either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, या तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोवाइड करो, सो दैट अ पुअर कैन सी द ट्रीटमेंट, जिससे गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके. Another important function of the public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. So these have to take an action to prevent the spread of disease. तो ये जो डिसीज है इसको स्प्रेड ना हो, इसलिए इसके रोकथाम के लिए भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है. दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव. ओके, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द पीपल, ओके, अगर इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है तो ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. ओके, the participation of people, it is must, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc. Okay, so this has to be done for all house in the area. तो घर के आसपास के सारे एरिया में ये सब होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, बाजू के घर में गंदगी है, आपका घर तो साफ सुथरा है, तो बाजू के घर के मच्छर आपके घर में आ जाएंगे. ठीक है ना, लाइक दैट. सो यू नो दैट, रिकॉल दिस केस ऑफ हकीम शेख. आपको पता है ना, रिकॉल इट. वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? इस केस के बारे में आपको पता है कि हकीम शेख चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरे, उनके हेड को बहुत ज्यादा इंजुरीज हुई. Hakim Sheikh was in critical condition, okay, and 8 government hospitals refused to admit him, and he was in 14 hours in same critical condition. After that, a private hospitals में he admitted in a private hospital, and after that he
फाइल द केस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपने यहाँ तक देखा। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? ओके, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. This is the important that government have to provide healthcare facilities to all the people. The government must safeguard the right to life of every person. Government की ये जिम्मेदारी है, okay, that he have to safeguard, सभी की रक्षा करना पड़ेगा, safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. उसकी जान भी जा सकती थी, okay, लेकिन वो बच गए. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. ठीक है, अगर टाइमली आप उस जरूरतमंद इंसान को अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन. जो लाइफ का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, इट इज नॉट गिवन. The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health service, including treatment in emergency situation. अगर बहुत emergency condition आती है, situation आती है, तो you have to provide healthcare facilities and treatment also. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of provide the necessary treatment. So they have to provide them necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Hakim Sheikh को ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई थी. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि you have to pay the money that he spent on his treatment. So it is for today. Tomorrow we will see private health facilities. आज हमने देखा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ओके, गवर्नमेंट के अस्पताल, ओके, वो किस तरीके से होते हैं वो हमने देखे. अब देखें इन नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.